Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter 4 of our geography, which is maps. Learning objectives. Maps, sketches, types of maps, plan, features of a map. Let's warm up. Look at the pictures given below and find out A. The direction in which the river is flowing. What kind of road passes by the side of village Dumri? On what type of railway line is Sundarpur situated? On which side of railway bridge is the police station situated? Application skills. Read the story below using what you have read. Fill in the story map. Mila wanted to ride her bike. Her mother told her to put on her knee pads. Mila didn't like to wear knee pads so she didn't put them on. While riding down the sidewalk, Mila fell off her bike and scraped her knee. She went home and apologized to her mom, promising to wear her pads from now on. So in this map, fill on the details. What happened first, what happened second, what happened third, how did the story end. When we want to study only about a part of the earth, a country, a state, a city or a village, we need to use a map. जब भी हम किसी स्पेसिफिक एरिया की स्टडी करते हैं जैसे कि कंट्री, स्टेट, सिटी या डिस्ट्रिक्ट या विलेज, तो हमें मैप की जरूरत पड़ती है. नाउ लेट्स नो व्हाट आर मैप्स. मैप. A map is a true representation of a drawing or a drawing of any area of the earth on a flat surface. It is drawn according to a scale. Maps gives us accurate information of an area. They are very easy to carry and can help make comparisons between one area and another. The only drawback with map is that they do not show the accurate shapes and sizes of continents and oceans, especially as we move towards the two poles. जो मैप्स होते हैं वो किसी भी एरिया की या किसी भी जगह की ड्राइंग होते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस. तो इसलिए हमें मैप्स की जरूरत पड़ती है किसी भी जगह की एक्यूरेट जानकारी के लिए. The art of preparing map is called cartography. In order to represent a sphere as a flat surface, we get some distortions. The maximum distortion will be seen around the poles. मैप बनाने के आर्ट को कार्टोग्राफी कहते हैं, बट कुछ डिस्टॉर्शंस के साथ ही मैप्स बन पाते हैं और डिस्टॉर्शंस मैक्सिमम होते जाते हैं जैसे जैसे हम पोल्स के साइड मूव करते हैं. फैक्ट फाइल. The word map is derived from the Latin word mappa, which means sheet or napkin. History of maps. Map making is not a new concept, but it is an older concept. In early times, the Greek scholars made maps. The science of map making was developed by a Greek scholar, Claudius Ptolemy. He is also known as the father of cartography. The science of map making is called cartography. Map making की साइंस को कार्टोग्राफी कहते हैं. जो फर्स्ट मैप है वो क्लॉडियस टॉलेमी ने बनाया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी कहते हैं. जो हिस्ट्री ऑफ मैप है वो बहुत पुरानी है. बहुत पहले से लोग, एंशियंट टाइम से लोग मैप्स बनाते आ रहे हैं. जनरली ग्रीक स्कॉलर्स मैप बनाया करते थे. एडवांटेजेस ऑफ मैप्स. A map gives more information about the Earth's surface in a simple and graphical manner, which is very easy to understand. A flat map can show large areas on a single piece of paper. It is very easy to compare cities, countries, and other places as they are visible at the same time. It is easy to carry maps to any place as it can be folded and stored conveniently. Maps generally use signs and symbols in different colors. This makes it more understandable. Maps may be drawn for specific purpose. For example, a weather map shows the weather condition at a given time and a place. A political map shows the boundaries of a country, state, etc. Types of maps. Maps are of many types. The most commonly used maps are. Maps कई सारे टाइप के हो सकते हैं. जो सबसे ज्यादा commonly used होने वाले maps हैं उसमें कुछ maps को देखते हैं. First, political map. Political maps divide an area into administrative units such as countries, states, districts, villages, cities or towns with the help of lines to show borders or boundaries. जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को दिखाने के लिए यूज में आते हैं, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई विलेज, कोई कंट्री, कोई सिटी या कोई टाउन. बाउंड्रीज को दिखाने के लिए पॉलिटिकल मैप में बॉर्डर्स का, लाइंस का यूज किया जाता है, जैसे कि इस मैप में. In this image, this is the political map of India showing different states. Physical maps.
Maps which display identifiable landmarks of the earth are known as physical maps. Physical maps show natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. These maps also show the altitudes at various places, temperature differences, etc. Physical maps are also known as relief maps. तो जो फिजिकल मैप्स होते हैं वो मैप होते हैं जो लैंडफॉर्म्स को दिखाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, रिवर्स, वैलीज, ओशियंस और कोई भी ऐसी चीज जो नेचर ने हमें इस लैंड पर बनाकर दी है. फिजिकल मैप्स को रिलीफ मैप्स भी कहते हैं. जैसे कि इस इमेज में देखिए, इट इज द इंडियन फिजिकल मैप. इन द लूप, मैप is not the invention of modern age. Maps have been in use ever since man started exploring different parts of the earth. The credit of laying the foundation of the art and science of map making goes to the ancient Greek philosophers and scholars like Eratosthenes, Ptolemy, and others. Third, thematic maps. They provide us specific information such as representing climatic conditions, distributions of minerals, crops, industries, population, vegetation, transportation, etc. They are also called distribution map. Such maps can be seen in an atlas. An atlas is a collection of maps in a form of book. Thematic maps वो maps होते हैं जो कि किसी भी जगह की पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताते हो, जैसे कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस या वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, वहाँ की क्रॉप्स, वहाँ की इंडस्ट्री या पॉपुलेशन. और एटलस वो होता है जहाँ पर कलेक्शन ऑफ मैप्स होते हैं. यू कैन ऑल्सो से कि मैप्स की बुक को एटलस कहते हैं. नंबर 4, टोपोग्राफिक मैप्स और सर्वे मैप्स. Topographical maps show great details of the natural features of a small area including rivers, lakes, mountains, etc. along with man-made areas like parks, wells, cities and towns. Topographical maps वो maps होते हैं जो किसी भी एरिया को, किसी भी नेचुरल फीचर को बहुत डिटेल से दिखाते हैं, और ये किसी मैन-मेड फीचर को भी, जैसे कि पार्क्स, वेल्स वगैरह को भी डिटेल से दिखा सकते हैं. फीचर ऑफ अ मैप. How to read and interpret a map. Title. The title tells us what the map is going to show or tell us whether about the administrative unit, landforms, climatic conditions, distribution of crops, wildlife, population and so on. तो मैप को कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं. लाइक टाइटल वो होता है जो बताता है कि मैप किसके बारे में है, जैसे लैंडफॉर्म्स के बारे में या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में या वाइल्ड लाइफ के बारे में. डायरेक्शंस आर आल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप. यू कैन टेक एनी मैप. You will find an arrow printed on the right hand corner of the map. The alphabet N is written above the arrow. This arrow is called the north line. It shows north direction in the map. After knowing the north direction, you can easily find out the other directions such as east, west, south. So, दूसरी चीजें होती हैं डायरेक्शन. जो डायरेक्शन होती है वो मैप पर हमेशा शो की जाती है, जैसे कि हमेशा राइट हैंड के अबव कॉर्नर पर एक एरो बना होता है जिसके ऊपर नॉर्थ लिखा होता है. अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो हम बाकी डायरेक्शन का भी आसानी से पता लगा सकते हैं. एंड दैट्स हाउ वी कैन नो कि हम किस डायरेक्शन के बारे में मैप में देखना चाहते हैं या किस डायरेक्शन को ढूंढ रहे हैं. डायरेक्शन 2 टाइप्स की होती है, कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट. द डायरेक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, कार्डिनल डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. Cardinal directions. East, west, north and south are the cardinal directions. These are also called the cardinal points. These directions intersect each other at right angle. North, east, west, south cardinal directions होती हैं. ये सारी directions एक दूसरे को 90 डिग्री पर intersect करती हैं. Second, intermediate directions. Directions situated between 2 consecutive cardinal points are called the intermediate directions. जो डायरेक्शंस 2 कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में हो उन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं. इन दिस मैप यू कैन सी द कार्डिनल डायरेक्शंस एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. सी द फिगर गिवन अबव. देयर आर लाइंस बिटवीन एनी 2 consecutive cardinal points. They are intermediate points or directions. Northeast, northwest, southeast and southwest are the intermediate directions. Scale. Scale is one of the main component in a map. Without the scale, the map cannot be called a map. Instead, we will call it a sketch.
When you go to a stationery shop, you ask the shopkeeper for a scale in inches and centimeters, which are helpful in various ways. Actually, the divisions tells us about the ground distance on the map. Let's say 1 centimeter is equals to 1 centimeter is to 40 kilometer. It means distance of 1 centimeter on the map represents distance of 40 kilometers on the actual ground. Most of the times this distance relationship is expressed in the ratio of distance between the same 2 points on ground. The distance of the choice of scale purely lies with the cartographer. He has to draw the map with accuracy and use his intelligence to scale down the features to fit on a small piece of paper. The functions of a scale is to tell the reader about the distance and the actual distance and area on the ground. A scale can be represented in the following 3 ways. जो स्केल होती है वो मैप का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है. स्केल से हमें किसी भी जगह की एक्चुअल डिस्टेंस पता लग सकती है. स्केल कंप्लीटली कार्टोग्राफर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसको स्केल का क्या रेफरेंस देना है. Statement of scale. In this, we simply write a statement. For example, 1 centimeter represents 5 kilometer. Representative fraction RF. In this, scale is represented in ratio or a fraction. It tends to show the relationship between the map distance and the actual ground distance. For example, 1:75,000 represents 1 unit on the map and shows 75,000 units on the ground. Here the unit for both distances is the same. Graphical bar scale. In this type of scale, the distance is shown with the help of a bar having primary and secondary subdivisions. This type of scale is found mostly in all the maps. To show large areas like continents or countries on a paper, a small scale is used. For example, 4 centimeter on a map can represent 400 kilometer on the ground. Such a map is called small scale map. When a small area like a town or village to be represented on a paper, we use large scale. For example, 4 centimeter on a map can represent 400 meters only on the ground. Such a map is called large scale maps. More details are available on a large scale map than a small scale maps. स्केल के बेसिस पर हम मैप को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज स्केल मैप या स्मॉल स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप में छोटी सी डिस्टेंस को थोड़ा अच्छे से ज्यादा डिटेल में दिखाया जाएगा एंड स्मॉल स्केल मैप में कम में. कन्वेंशनल सिंबल्स. कुछ सिंबल्स जिससे हम पहचान पाए कि अगर मैप में वो सिंबल है तो उसका क्या मतलब है. A map becomes more useful if more information or details are available from it. Suppose we want to show the location of bridge, river, well, post office, police station, etc. In a survey map, it is impossible to draw their actual pictures or write their names at the appropriate places in the map due to the limitation of space. So these objects are shown in the form of symbols that occupy lesser space and are internationally accepted. The world over, the same conventional symbols are used and understood by all. Some of the conventional symbols are listed. Sometimes colors are used to show purpose. Example, blue for water bodies, green for grasslands, brown for hills, etc. The distance, direction and symbols are the 3 main components of maps. Conventional symbols इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि मैप पर ज़्यादा डिटेल करने की जगह नहीं होती. तो एक सिंबल एक स्टैंडर्ड है जो पूरे वर्ल्ड में हर कोई समझ सकता है, जिससे पता चले कि वो मैप क्या बताना चाह रहा है. जैसे कि कुछ कलर्स भी डिफाइंड है, जैसे कि वाटर के लिए ब्लू, ग्रीन ग्रासलैंड्स के लिए एंड ब्राउन हिल्स एंड माउंटेन्स के लिए. कुछ सिंबल्स यहाँ पर लिस्टेड हैं. आप इन सारे सिंबल्स को देख सकते हैं और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप पढ़ सकते हैं. स्केचेस. A sketch is usually a rough diagram made from one's imagination without measuring the actual distance on the ground. It is actually a map with outlines drawn without a scale and also without signs and symbols. Sketch may be called a rough map. For example, drawing a sketch of India on blackboard to explain. A sketch can be drawn more easily in comparison of maps and plans. Another example, explaining the location of a shopping complex or a market or a cinema hall from your residence. Sketch is kind of a rough map होता है जिसमें हमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हम स्केल
की जरूरत नहीं लेते, डिस्टेंस को एक्चुअल में नहीं नापते हैं। स्केच हम तब भी बना सकते हैं जब हमें किसी को बताना हो कि हमारे घर से या हमारी लोकेशन से सिनेमा हॉल कितने दूर है, रेस्टोरेंट कितनी दूर है। तो स्केच इज काइंड ऑफ अ रफ मैप। प्लान. A plan is a detailed drawing which is done to show any small area on a large scale. Sometimes a sketch is made to help people prepare a proper plan for the area, just like maps. A plan is also made as per scale. However, the scale of a plan is much larger. Unlike a sketch, a plan will show actual measurements accurately. Most common types of plan are used for the construction of houses and buildings. Geographical information aids like globe, map, plan, sketch are of great importance in the various fields of knowledge and activity. प्लान एक वो ड्राइंग होती है जिसमें स्केल का यूज बहुत एक्यूरेटली होता है, बट प्लान में किसी छोटे से एरिया को बहुत डिटेल में दिखाया जाता है। जनरली प्लान्स कभी कभार किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज किए जाते हैं जब किसी बिल्डिंग को बनाना हो और उसकी एक एक डिटेल उस प्लान में डालनी हो। तो ये सारी चीजें जैसे कि प्लान, स्केच एंड मैप्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नॉलेज और एक्टिविटी की फील्ड में। कंपैरिजन. मैप, स्केच एंड प्लान को जब साथ में कंपेयर करते हैं, एरिया. मैप्स एरिया कवर्स अ लार्ज एरिया. स्केच may cover a small or large area. Covers a small area. Scale. For map, usually drawn on a small scale. For sketch, not drawn to scale. For plan, drawn on a large scale. Details shown in map cannot show many details. Sketch does not show all details but only the necessary ones. Plan shows accurate details. Value and life skills. Maps carry stories that might be political, about the terrain, or about some factor depending on the type of map. Each map is part of bigger story about a place. Land is never just land. It has a history that shapes it and a history that was influenced by the land. It contains important places and the reasons why they become important differ according to the society and its history. Recapitulation. A map is a true representation or a drawing of any area of the earth on a flat surface. Various types of maps, political, physical, thematic and topographic, are prepared for different purposes. Components of maps are title, direction, scale and conventional symbols. Signs and symbols help us understand a map better. A map without a scale is known as a sketch. A plan is a drawing of a small area on a large scale. Thank you class. Let's meet again in the next chapter.